आर्टिकल 19 क्लॉज 1 कौन कहबी तापरे हां ए कहबी ना कौन कौन कह जाबो सब क्लॉज 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी सब क्लॉज सी सब क्लॉज डी सब क्लॉज ई सब क्लॉज ई एंड ई एफ नाही देन हमर रहिला जी बुझी परछो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जेतोल तमे पढिबो आर्टिकल को सेमती एई उपाय रे पढिबो 19 1 ए कहिला पय ठीक अछि बट ऑलवेज हैव अ प्रैक्टिस 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बी सी डी ई एंड जी सर केमती मु मन रखिबी केमती मन रखिबो साइड एंड हां केमती मन रखिबो ता पे एक्स्ट्रा पैसा लागियो मो पर गोटे टॉनिक अछि बुझी परछो तुम जदि ऑर्डर करिवो ताले मु प्रिपेयर करके समस्त को गोटे गोटे बोतल देबी यू कैन कंज्यूम आ सब किछ मन रखि परिवो रिवाइज मल्टीपल टाइम्स बट हाँ छोटो मोटो ट्रिक किसी मु कहिबी मोस्ट ऑफ द पॉलिटी जदि तुम लॉजिक लगाओ कॉमन सेंस लगाओ ताले आराम से बुझी परिबो आमे चेष्टा करू घोषिया पे सेथिबे हम मन भितर किछि ले पसेरे टिके कॉमन सेंस लगाओ टिके बैकग्राउंड लगाओ कॉन्टेक्स्ट लगाओ काहे के हला कोन पे हला देन ऑटोमेटिकली तुम बुझी परिबो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट जोटा रही छी आर्टिकल 19 clause 1 sub clause A is freedom of speech and expression अच्छा या विषय टिके हमें डिस्कशन करिबा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कहि परिबो स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहले तुमे कोन बुझो बुझी पालो यस और नो यस और नो यस ये होचे स्पीच बुझी पालो सी मुंडा एमती एमती कले दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन ना वर्बल वॉइस माध्यम रे जो जिनसटा हमें कहिबा स्पीच बोली कहू रिटन लिखित आकार जो जिनस कहिबा ताकू मध्य स्पीच रे धरा जाए एक्सप्रेशन अर्थ किछि भी हे परिबो हां आमे मुंडा नोट करूचे दैट इज एक्सप्रेशन तबे देखिथिबो धारा जो माने प्रोटेस्ट करंती विभिन्न प्रकार प्रोटेस्ट थाए ओके जापान रे इंटरेस्टिंगली तांकर जो बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट अछि जो माने कंडक्टर आ बस ड्राइवर मानकर दरमा बढ़ु नथला ओके से माने प्रोटेस्ट करले हमर एटी किमते प्रोटेस्ट करंती हैं हां से एजी छको की टायर फायर जाली देबे किमा से जो पूरा बस आउ चले ट्रैफिक जाम तमे पैसा एबे बढ़ाऊ नले हम तो बस चलेबुनी आउ किंतु जापान रे कोन करचंती से जो स्ट्राइक करले से माने बस चलेले किंतु काहाटो भी टंकाटे नेले नहीं माने गवर्नमेंट को जोठी पिंच हवा दरकार ताको सेठी पिंच करा हेची रेवेन्यू लॉस हैला एमती करिके दिने दि दिन खंडे से माने प्रोटेस्ट करले सो तो लोकों को असुविधा न हो किंतु काहाटो भी 1 रुपी नेले नाही that is one way of expression or protesting तमरो किछिटा प्रोटेस्ट देखिथिबो जो माने आई थिंक ब्लैक रिबन गोटे खंडे बांधी थिबे किबा किछि गोटे सिंबलाइज थिबो से मानकर वे ऑफ प्रोटेस्ट ना बट ए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मु
पर्सनली भावे कि इट इज नॉट वन फंडामेंटल राइट, इट इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ये गोटिए नुह, इट इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. So one understanding of freedom of speech and expression is to speak and express freely without fear. That is called as freedom. Is to speak freely, जहाँ भी आमे कहिबा freely कहि परिबा किमा freely express करि परिबा and without fear. One way of understanding the freedom of speech and expression. Second way of understanding this freedom of speech and expression is to choose medium of communication. To speak or express. गोटे हेला तो आमे फ्रीली विदाउट फियर आमे कहि परिबो, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस आमे निजर कथा रखि परिबा, आमे एक्सप्रेशन करि परिबा, ताकू आमे कोन कहू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आउ गोटे होची टू चूज द मीडियम टू स्पीक एंड टू एक्सप्रेस. टू चूज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. मीडियम विभिन्न प्रकार हे पारे, के भर्बाली कहि पारे, के लिखित आकार कहि पारे, के मे बी गोटे पिक्चर माध्यम रे भी देखै पारंते. ओके, so you need to have a freedom to choose your own medium, the way you want to express or speak for a certain things. That is also freedom of speech and expression. Freedom of speech and expression also means not to speak and not to express. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अर्थ या नुह जे खाली कहि चलिबा एक्सप्रेस कर चलिबा. इफ यू डोंट वांट टू स्पीक, दैट इज आल्सो फ्रीडम ऑफ स्पीच. कि मु कहया पे चाहूनी, मु एक्सप्रेस करिया पे चाहूनी, जोटा कि माने तमे माने जेबटू बैच स्टार्ट हे जे बहुत छात्र छात्री ऑफलाइन ऑनलाइन समस्त एटा को यूज करी करी आसीचो. जेतबेले भी गोटे प्रश्न पचारा जाय तम मानकू, तमे माने अजनतरे आकू यूज करिचो. आई एम यूजिंग freedom not to speak and not to express. Okay, freedom of speech and expression means केवल कहिबा नुह, तुमको कहया पे इच्छा नै, not to speak and not to express. का ऊपर राग रुषा थिबो, राग थिले अलग कथा, रुषि की जदी थिबो एटा कहिबो आमी पॉलिटी क्लास में जे सिखि गसछि कि आई एम यूजिंग माय freedom of speech and expression not to speak and not to express. बुझी पारछो? ओके. इंटरेस्टिंगली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे गोटे डिबेट चलथिला. ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो आजिर कथा नुह, एटा संविधान जेबटू आमे लेखा स्टार्ट कले ड्राफ्टिंग कमिटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरपर्सन थिले. डिस्कशन जेतलो स्टार्ट हला सेठी सी राजगोपालचारी सीए कौन कहिले कि राइट टू प्रेस और फ्रीडम ऑफ प्रेस सी राजगोपालचारी कहिले कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को गोटे सेपरेट आमे फंडामेंटल राइट बोली घोषणा करवा कथा. आमे समस्त कौन को मीडिया होची केते नंबर पिलर, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मान्यता दबा कथा. तो सही समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गोटे स्टेटमेंट थिला. सी कहिले इट इज नॉट नेसेसरी, फ्रीडम ऑफ प्रेस को आमे फंडामेंटल राइट सेपरेट दबाटा नेसेसरी नुह. काहे कि नुह कहिले कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जोटा तार हेड किए हमर प्रेस. प्रेस माने कोन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेस? प्रेस काहू कुआ जे, इधर इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक और मे बी प्रिंट प्रेस जोटा खबर कागज तमे पढुचो, इलेक्ट्रॉनिक टीवी टेलीविजन हे गेला, एबे सेपरेटली गोटे सोशल मीडिया भी स्टार्ट हेची. सो तांकर हेड किए इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन हे गेला, रेडियो हे गेला. ना ना ना, हु इज रेस्पॉन्सिबल?
एडिटर जी से विभाग रे एडिटर थिबे द पर्सन इज रेस्पोंसिबल यस और नो यस अर्थात गोटे न्यूज जदि पब्लिश होउची एटा हमें जानिया पड़िबो जे एडिटोरियल इज रेस्पोंसिबल जेहेतु एडिटर अप्रूव करिछि देन ओनली से न्यूज टा पब्लिश हुए सो डॉक्टर बी आर अंबेडकर कहिले कि एडिटर निजे जने व्यक्ति एज अ पर्सन एंजॉयज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ठीक अछि एंजॉयज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आल्सो द एडिटर हैज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 2 अंडर रे तो सेथिपाई सेपरेटली गोटे फंडामेंटल राइट क्रिएट करिबा कोनोसी प्रकार दरकार नुह एम आई क्लियर एबे जानिलो कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस एज अ फंडामेंटल राइट इन रियलिटी इट इज नॉट एठु गोटे जिंस तुमको बुझिया पड़े सब जिंस तुम काहे कहूच बिकॉज़ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट वन इज एक्सक्लूसिव अनदर वन इज इंट्रूसिव व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव एंड इंट्रूसिव एक्सक्लूसिव रो अर्थ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ए जिंसटा संविधान रे कैटेगोरिकली लिखा हेची बुझी पारछो जो जिंसटा क्लियरली लिखा हेची एज अ स्टेटमेंट हिसाब रे ताको हम एक्सक्लूसिवली कहिबा इंट्रूसिव काहाकू कहिबा इंट्रूसिव रो अर्थ एया हेई पारे जेमति मु कहली कि फ्रीडम ऑफ स्पीच रो एते सारा अर्थ हेची सो दीज आर ऑल इंट्रूसिव सो फ्रीडम ऑफ प्रेस is an intrusive fundamental right under article 19 clause 1 sub clause A. It is not exclusive किंबा बहुत समय रे कोन हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरप्रेट करे कि एटा नुह एटा हेई पारे यार अर्थ एटा भी हेई परिबो बुझी परछो सो याकू हमें कोन कहिबा इंट्रूसिव फंडामेंटल राइट प्लीज रिमेंबर एक्सक्लूसिव और इंट्रूसिव रो अर्थ तुम जानि पालो एक्सक्लूसिव रो अर्थ जोटा संविधान रे वर्ड शब्द हिसाब रे लिखा हेची स्पीच जोटा जेमति फ्रीडम टू असेंबल एटा लिखा है दीज आर एक्सक्लूसिव फंडामेंटल राइट बट इंट्रूसिव रो अर्थ जोटा लिखा हैनी किंतु ताको इंटरप्रेट करा जाए कि या अंडर रे फ्रीडम ऑफ प्रेस भी गोटे फंडामेंटल राइट हेई परिबो को हां इम्प्लिसिट भी कहि परियो तमे यस 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 एप्लीकेबल ठीक अछि नेक्स्ट होछि देखो एई परिप्रेक्षी रे सुप्रीम कोर्ट करो किछरा गाइडलाइन आसला कोन गाइडलाइन टिके जानिबा हमरो रिसेंट इलेक्शन भी हला हमरो जनरल इलेक्शन हला स्टेट इलेक्शंस भी कंडक्ट हला ता पूर्व पंचायत इलेक्शन भी हेतिला नाउ तमे समस्त जानिथिबो कि आमे जेतोले वोट जेतोले दउ आमे दुबा पूर्वरो कैंडिडेट छिड़ा हेले से माने ताकर प्रचार करिवे आमे को बेसिस रे वोट दबा कोन जानि कि आमे वोट दबा आमे गोटे कैंडिडेट सपोज मु छिड़ा हेली तमे सिना केति किछि जण जानिछो जो माने ऑनलाइन पढछन जानिछोनी कि बाकी देखिथिबे जानिछोनी बाकी लोक तो जानि नाथि जदि मु एज अ पर्सन छिड़ा हेबी कोनोसी सीट पय जदि मु न जिति पारे बट मते को बेसिस रे से माने वोट देबे कोनोसी भी पोस्ट पय ताको वेल्थ देखिया पड़िबो जहाँ प्रॉपर्टी अछि जहाँ टंका अछि देखिया पड़िबो सेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट मानकर काम से माने केते कोन देखैबे एजुकेशनल बैकग्राउंड देखैबे आ क्रिमिनल रिकॉर्ड इफ एनी तांको सेटा शो करिया पड़िबो इनफैक्ट इलेक्शन कमिशन गोटे एप्लिकेशन भी अछि से एप्लिकेशन डाउनलोड कले तमरो कॉन्स्टिट्यूएंसी रे जे भी एमएलए एमपी थिबे तांको विषय रे तमे जानि परिबो पढि परिबो गोटे रजिस्ट्रेशन बॉन्ड पेपर भी अच्छी से सब डिटेल्स तमे पाई जिवो केते टका अछि कोन अछि सो दैट विल बी बेसिकली इजी फॉर यू इठु हमें कोन जानले कि राइट टू वोट is an intrusive fundamental right or implicit fundamental right why काहे कि हमें वोट दउचे तार अर्थ कोन what is the meaning of giving vote हाँ अर्थ कोन हमें मतामत दउचे yes or no मतामत रो अर्थ speech and expression हमें गोटे जिंसर मतामत देले गोटे जिंस ऊपर हमें मतामत देले कि आमे गवर्नमेंट को रखिबू कि रखिबुनी एटा मतामत कहिबा सो तार प्रोसेस होची वोट दबा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये भी सही प्रकार रो सो राइट टू वोट इज एन intrusive fundamental right these are not exclusive last
होउची तमरो freedom not to only speak or express your view, but also to speak, express somebody else view. बेसिकली मु जो तुमको पाठ पढ़ाऊँगी ये तो मु जन्मर सब पढ़ी आसीनी मु भी किछिटा बही रेफर कली किछिटा मु अपडेशन नेली देन मु तुमको गोटे जिनस डेलीवर करूची मु कौन कहली कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर या कहिथिले कि सी राजगोपालचारी या कहिले एस नो सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रो अर्थ या नुह जे केवल मोर पॉइंट ऑफ व्यू टा को फ्रीली आउ फेयरली मु एक्सप्रेस करी विदाउट फियर एक्सप्रेस करी यार अर्थ या भी कि स्पीकिंग फ्रीली एंड एक्सप्रेसिंग समवन एल्सेस व्यू बुझी पारछो सो नाउ दिस ब्रिंग्स टू मी द concept called as fair criticism. This brings the concept called as fair criticisms. आमे तमे समस्त देखो साधारणतः जो माने पॉलिटिकल पार्टी थांती से माने कोन करंती जणे अन्य जण को ऊपर आक्षेप करंती कि नै कि नरेंद्र मोदी या कहिले कि जण कहबा राहुल गांधी या कहिले सो से माने आक्षेप करंती किछि भलो कहंती ता माने तमे एमानकर पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेशन करूचो हमरो किछि क्रिटिसाइज करंती कि नाही सी या करूचंती जोटा कि ठीक नुह पर तम पाखे फ्रीडम अछि सेटा करिया पय किए तो कहूनी जे नाही तू मो नार कहि परिबोनी यस आ यूट्यूबर मानकर लैंग्वेज रे आको कोन कहिबा तो कोन कहंती रोस्ट मारिबा अछि ना यूट्यूब रे ए तांको भाषा रे रोस्ट मारिबा होची क्रिटिसिजम्स एथरे रागिबोनी किंतु ना so right to criticize also a part of fundamental rights. Is it clear?